Dr. Gaurav, you mentioned about Boot Star rating. Can you please elaborate what is that? Actually, Both Star rating was a rating system and it helps in assessing the protection of the sunscreen from UVA radiation. सनस्क्रीन को हम ना यूज करें तो इससे लॉन्ग रन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? Long run में क्या होगा कि you will develop lot of pigmentation changes which are not reversible, such as pigmentary demarcation lines develop होंगी या फिर melasma develop होने के chances बढ़ जाएंगे या freckles हो जाएंगे बहुत सारे that are very difficult to treat and अगर sunscreen नहीं लगाओगे तो वापस आ जाएंगे and then there is always photo aging, आपके wrinkles जल्दी पड़ेंगे, आप बूढ़े जल्दी दिखोगे. To look beautiful and smart is the quest of human beings right from the beginning of civilization. So welcome everyone on our today's episode of #Sunscreen Must podcast. So before starting this podcast, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज इस podcast में हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं. So we are going to discuss about the sunscreens, why they are helpful and how to keep our skin healthy with the tips which are going to be suggested by a very renowned dermatologist. Please welcome renowned dermatologist Dr. Gaurav Bhardwaj all the way from Delhi. Sir, welcome to our podcast. Thank you so much. So sir, my first question to you is, why did you choose your profession as a doctor? आपने इस profession को क्यों choose किया and that too dermatology? See, I became a doctor because my father is a doctor Okay. and he's a surgeon. Okay. And during my MBBS, I find that dermatology was my calling. So I chose dermatology as the subject I want to be with for my rest of my life. So sir, in the season of summer, we have to face a lot of sun exposure and UV rays. So sir, why sunscreen becomes necessary in this role? First of all, you have to understand that during summer months, Yeah. our skin faces a lot of challenges. Yeah. See, in the summer months, there is direct exposure of the sunlight to the skin, especially with the whatever clothes we wear. So that exposure and a long exposure is there. So it is definitely damaged by the UV radiations. Then there is the dehydration factor. Then there is always that pigmentation that is the problem. Yeah. Your skin tends to become more oily during the summer months, and that is why there is a lot of acne breakouts during summer months. Correct. Then pigmentation, and then mostly fungal infections, which are very common during summer months. Fungal infection. Yes, it's very common during summer months. So skin has to face a lot of challenges during summer months, and we need to take care of our skin during those summer months. So sunscreen is one of an important part of the summer skincare. Dr. Gaurav, as you mentioned about sunscreen, so is it necessary to use sunscreen only in the summers or throughout the year? I think it should be used throughout the year, Yeah. even if you are not going out. That is why, because see, if you're, people have this ideology that if you're going out, you have to apply sunscreen. If you're in your home, you do not have to apply sunscreen. But even if the sunlight is coming inside your house, UVA radiation is still coming. Okay. So this will cause damage. So you need to apply sunscreen even if you're in your house. Now there are patients, they say that, doctor, I stay in my office 24 hours and I stay in my cubicle in front of the computer monitor. So that computer screen emits UV blue light. Yeah. So that UV blue light causes skin damage that is similar to that of ultraviolet radiation from the sun. So even if you're not going out, you're staying indoor in your office, you need to apply sunscreen. Sunscreen should be a part of your daily routine. Routine. So sir, is mobile light also blue light? Yes, definitely. Mobile light is also blue light. You see in the recent ads, that Lenskart ad, they say that there's a blue light filter lenses there because that blue light causes damage to our eyes as well as to the skin. Nowadays, sunscreen also have that special blue light filter sunscreen also that protects against that blue light that is emitted from our phones. Dr. Gaurav, sunscreen was a medical product, but nowadays, since last 10 years, I think malls में भी मिल रहा है, shops में भी मिल रहा है. So हमें क्या करना चाहिए? मॉल से सनस्क्रीन लेना चाहिए, शॉप से, या हमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, तब सनस्क्रीन लेना चाहिए? Well, honestly, I'm happy that people are more aware about sunscreens and they are purchasing it from wherever they can get. Yeah. But if you want that ideal sunscreen, you need to visit a dermatologist because not every sunscreen will suit every skin type. So you need to consult a dermatologist, which is the ideal sunscreen. So an ideal sunscreen depends upon the person.
but there are few things that you need to take into consideration before you buy a sunscreen. First of all, it should be a broad spectrum sunscreen. That is, it should protect against both UVA as well as UVB radiation. Secondly, it should have a higher SPF. We recommend anything over SPF 30, SPF 50, good enough, with a boot star rating of at least 2 or 4. And thirdly, you should look for what is your work, what is your working. If you are going outside daily, you need a physical sunscreen. Whether you are staying indoors all throughout the day, you need a chemical sunscreen. If you are sweating a lot, you need a sunscreen with that is water resistant or sweat resistant. And whether your skin is oily or dry, whether you should take a lotion based sunscreen. But you should just the two things are the SPF and a broad spectrum. That is the only thing you can judge. But which sunscreen will suit you, that is the dermatologist's call. Okay. And nowadays there are a lot of sunscreens which are coming with the ingredients such as the glycolic acid, you have the glutathione, you have a lactic acid is there. So they have additional benefit, but all of these is dependent upon your dermatologist because he will assess your skin and then give you a sunscreen. Sunscreens nowadays are very expensive. You don't want to buy the wrong sunscreen. Dr. Gaurav, you mentioned about boot star rating. Can you please elaborate what is that? Actually, boot star rating was a rating system which was developed by UK, and it helps in assessing the protection of the sunscreen from UVA radiation. So it is rated from 0 to 5. The higher number is always better. So it helps protecting the skin from UVA radiation, which is the one that actually penetrates the clouds and well as your glasses also. It is coming inside your house. So you need protection from that. SPF is only for ultraviolet B radiation, but you need a boot star rating. Dr. Gaurav, how is summer damaging our skin? Can you please explain like what are the procedures? किस तरीके से हमारी skin affect हो जाती है? See, during summer months, as I told you, that there is prolonged exposure of the sun. Yeah. So this prolonged exposure to a sun, our body has this protective mechanism that initially there is pigmentary changes. You develop a tan, you develop certain amount of pigmentation on the hand, which gradually disappears. But over a span of time, if there is continuous exposure every day, this sun rays, these UV radiations will cause permanent damage to your skin cells, and this can eventually result in skin cancers. So it is very important to protect your skin during summer months. Secondly, during summer months there is dehydration. Now there is a story behind it that as we all know that during summer months the skin becomes dehydrated because all the water is lost through sweat. Correct. So if you are less than 30 years of age, your body tries to compensate it with increased oil production to moisturize the skin. But eventually this results in a lot of acne production. And if you are more than 30, your skin becomes dry. Now this dry skin is very irritant and you will develop allergic reaction even to products that you were previously applying. And you come to a doctor, I was applying this cream for a very long time, now why did I develop allergy? Yeah. It's just because your skin has become so irritated because of that dryness factor. So there's increased chances of allergic reaction. Then there is always this fungal infection and bacterial infection, which is common during summer months because that, especially this summer with the excessive sweating, it provides a moist environment and which provides a fertile ground for the fungal infection to grow. Correct. So it is very common during summer to experience bacterial or a fungal infection. So Dr. Gaurav, there are multiple age people जिनके एज ग्रुप्स बिल्कुल अलग है. कोई छोटा बच्चा भी है, इन्फेंट्स भी होते हैं, बच्चे स्पेशली खेलने धूप में चले जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो एल्डरली पीपल है. तो क्या उनके हिसाब से सनस्क्रीन का फॉर्मुलेशन चेंज होगा और एक कॉमन सनस्क्रीन यूज करके हम लोग सब सही रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं? मैम देखो ऐसा है कि द सनस्क्रीन कम इन लॉट ऑफ फॉर्म्स. ठीक, देयर इज जेल फॉर्म, लोशन फॉर्म, स्प्रे फॉर्म and gel form, spray form, lotion, and then cream form is there. Okay, and every person has a different skin at their respective age. Now a child, a baby, if you want to apply sunscreen to a small child or a baby, you need to apply a physical sunscreen, because if you apply a chemical sunscreen
there is chances of any allergic reaction. So you want to apply physical sunscreen to that person. Now, a person who is in their teens or in their 20s or 30s, 20 or early 30s, they tend to have a oily skin. So you need to apply a gel-based sunscreen. Once you are above 35, 40, you are reaching that your skin has become slightly on the drier side. So you can apply sunscreen which is lotion-based. A patient who has a sensitive skin should apply a cream-based sunscreen. So every age, there is no one sunscreen for everyone, and every age has a specific sunscreen when to apply it, and that I think is the dermatologist's duty to tell you which one is the best one. डॉक्टर गौरव, जैसा कि आपने अभी बताया कि इन्फेंट्स हो या फिर एल्डरली पीपल हो, सभी को अपने हिसाब से सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए. बट इन इंडिया जब तक प्रॉब्लम नहीं आती लोग हॉस्पिटल नहीं जाते और सनस्क्रीन को लेकर अवेयरनेस भी थोड़ी सी कम है. तो ना लगाने से, अगर सनस्क्रीन को हम ना यूज़ करें तो इससे लॉन्ग रन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? जब आप सनस्क्रीन नहीं लगाते, व्हेन यू आर नॉट अप्लाइंग सनस्क्रीन, इनिशियल डैमेज क्या होगा? स्किन टैन होगी या स्किन बर्न हो जाएगी, विच कैन बी रिपेयर्ड ईजिली. ठीक है, वो आपका 1 वीक का ट्रीटमेंट लोगे, 2 वीक का ट्रीटमेंट लोगे, स्किन वापस से ठीक हो जाएगी. बट लॉन्ग रन में क्या होगा कि यू विल डेवलप लॉट ऑफ पिगमेंटेशन चेंजेस विच आर नॉट रिवर्सिबल, सच एज पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइंस डेवलप होंगी, या फिर मेलाज्मा डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फ्रेकल्स हो जाएंगे बहुत सारे दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. एंड अगर सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो वापस आ जाएंगे. एंड देन देर इज़ ऑलवेज फोटो एजिंग, आपके रिंकल्स जल्दी पड़ेंगे, आप बूढ़े जल्दी दिखोगे. सो सनस्क्रीन ओवरऑल हेल्प्स यू एज ग्रेसफुली. सो व्यूअर्स, आई थिंक अब आपको पता लग गया कि सनस्क्रीन क्यों लगाना ज़रूरी है. डॉक्टर गौरव, अभी थोड़ी देर पहले आपने मेंशन किया था अबाउट बूथ स्टार रेटिंग एंड देयर इज वन मोर थिंग, पीए रेटिंग. सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एंड व्हेन वी गो टू बाय अ सनस्क्रीन, हमें क्या पहले देखना चाहिए, बूथ स्टार रेटिंग या पीए रेटिंग, या फिर दोनों? किस तरीके से हम डिसाइड करें कि कौन सा सनस्क्रीन? सी, बूथ स्टार रेटिंग और पीए रेटिंग, दोनों का रेटिंग इसलिए बनाया गया था टू असेस द सनस्क्रीन प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवीए रेडिएशन. यूवीई. ठीक, तो यूवी तो ये बूथ स्टार रेटिंग यूके के लोगों ने बनाया. हाँ. उन्होंने उसे ग्रेड किया बिटवीन 1 to 5. तो जितना ज़रा हायर नंबर होगा उतना अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी. और पीए रेटिंग जो है वो बनाया जापानीज़ लोगों ने. उन्होंने ग्रेडिंग दी 0 to 4. मोर नंबर ऑफ प्लसेस, मोर द प्रोटेक्शन. बट दोनों बूथ स्टार रेटिंग और पीए रेटिंग दोनों चीज़ यूवीए रेडिएशन को प्रोटेक्शन इंडिकेट करती है एक सनस्क्रीन में. डॉक्टर गौरव, मैंने आई गॉट टू नो कि आज मेरी आपसे मुलाकात होने वाली है, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना सनस्क्रीन ले आऊँ और आपसे पूछूं कि क्या मैं सही सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ. बिकॉज आई हैव एन एक्ने प्रोन स्किन, मुझे एक्ने थोड़ा जल्दी आ जाता है. सो मैं लेकर आई हूँ, प्लीज़ आप बताइए. एंड साथ ही साथ आप इसको यूज़ करने का सही तरीका भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें. दिस इज़ द सनस्क्रीन. अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ गुड सनस्क्रीन. जैसे आपने कहा आपकी स्किन जो है वो ऑयली साइड पे, तो यू हैव चोजन अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन विच इज़ आई थिंक अ गुड सनस्क्रीन, क्योंकि ये ऑयल ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करेगी, तो एक्ने के चांसेस कम होंगे. सेकेंडली, आप देखोगे इसके अंदर एक चीज़ बहुत लिखी है कि नॉन कॉमेडोजेनिक. दीज आर सर्टेन हाईलाइट्स दैट अगर सनस्क्रीन में हो तो आप अश्योर हो जाओ कि आपकी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है. जैसे इसमें ऑयल फ्री लिखा है, नॉन कॉमेडोजेनिक रखा है, तो दैट मीन्स इट इज़ गुड फॉर पेशेंट्स हैविंग ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन. एंड इसमें वेरी वाटर रेजिस्टेंट. देन अगेन इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट, तो आपका जैसे आप आउटडोर एक्टिविटी में जाते हो या फिर बहुत पसीने आते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड सर्विस, बहुत गुड कवरेज. अब जहाँ तक सवाल रहा कितना लगाना है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 teaspoon टू कवर द होल फेस. 1 teaspoon यानी अराउंड 5 ml के आसपास काफ़ी रहता है टू कवर द होल फेस. इफ़ यू वांट टू अप्लाई ऑन द बॉडी एज वेल, तो बॉडी पे जैसे आर्म्स के लिए इट इज़ 1 ml ईच, लेग्स के लिए इट्स अराउंड 2 ml ईच. सो जस्ट टू सिंप्लीफाई हाउ टू अप्लाई द सनस्क्रीन, व्हाट यू नीड टू डू विद द इंडेक्स फिंगर एंड दिस डिस्टल मेटाकार्पल आई सी इन मेडिकल लैंग्वेज, बट ये जो लाइन दिख रही है जो सबसे ऊपर वाली है, आपको नेल के को टॉप से लेके यहाँ तक आपको सनस्क्रीन लेनी है. सो व्हेन यू आर टेकिंग अ सनस्क्रीन, यू जस्ट टेक इट, दिस मच इज इनफ फॉर योर फेस. डॉक्टर गौरव, क्या स्किन केयर के लिए सिर्फ सनस्क्रीन इम्पॉर्टेंट है या फिर एक
हेल्दी स्किन के लिए और भी चीज़ें हैं जो हमें प्रैक्टिस में लानी चाहिए. जस्ट लुक एट योरसेल्फ, आपकी स्किन खुद ही बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है. तो आप प्लीज़ बताएं कि आपका रूटीन क्या है, हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि वो भी अपने स्किन को कैसे आपकी तरह ग्लोइंग और हेल्दी रख सकते हैं. वेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इतना ज़रा ध्यान नहीं रख पाता, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता. But see, there are 4 pillars to take care of your skin. First pillar is protection. You need to protect your skin. Especially during summer season, you need a broad spectrum sunscreen. इसके अलावा you need to wear protective clothing. You should wear full sleeves clothes. Wear cotton clothes, but full sleeves clothes to protect your skin. And कोशिश करें कि between that 10 a.m. to 4 p.m. तक बाहर ना निकले. Okay. Second important चीज़ है hydration. Drink lots and lots of water. It will keep your skin hydrated. Or by the end of the day, you can apply a moisturizer that contains hyaluronic acid, which helps in replenishing the skin, the water which is lost. Yeah. Third is cleansing. Cleansing is very important. It removes that excess oil from your face. And last but not the least, mild exfoliation. It helps removing dead cells from your skin surface. So these are the 4 pillars: protection, hydration, cleansing, and exfoliation. डॉक्टर गौरव, एनी डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे जिसको फॉलो करके स्किन को रेडिएट रखें? Well, honestly, it's like you should have a balanced diet, but drink lots of water, increase your intake of especially vitamin C in your diet, which helps in repairing the skin damage. And just keep yourself hydrated and take a balanced diet. Stay away from junk food, especially chocolates and sweetened products, because these eventually stimulate acne production. So it increases the oil gland activity. So you need to stay away from the sweets as much as possible. Take a balanced diet and you'll be fine. थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरव, आपने काफ़ी सारा समय दिया और आपने जो टिप्स दिए उससे डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है. सर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, लाइक सॉरी टू इंटरफेयर, दैट देखो ऐसा है कि यू शुड रिमेंबर दैट द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज आवर स्किन. या ठीक, जो आप देखते हो वो ग्लूकोन डी का ऐड और एक आदमी आता है जिसमें से ऐसे करके प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है एंड वो रेज ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर रही है. दैट इज एक्चुअली योर स्किन reflecting all the infections, all the UV radiation, everything away from your body. It is the first barrier of defense of the body to any infection. So you need to protect your skin. It is very important because then it will protect you from other infections. सो व्यूअर्स, डॉक्टर गौरव ने हमें बहुत सही एग्जाम्पल दिया है कि स्किन जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है उसका ध्यान कैसे रखें एंड सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरव भारद्वाज, आपने अपना कीमती समय में दिया. आपने इतनी सारे स्किन केयर टिप्स हमारे दर्शकों को बताए जिससे वो अपनी स्किन को और भी ज़्यादा प्योरीफाई कर पाएंगे और हेल्दी रख पाएंगे. थैंक यू सो मच सर. Thank you viewers, and thank you for organizing this. #sunscreenmust podcast. Thank you. Viewers, thank you. And for more skincare tips, stay connected to our podcast channel, #sunscreenmust. You can also find us on YouTube, Spotify, and Apple Podcast, and also follow on Instagram. Thank you so much.